Without further delay, I'll move on to the next session. And the next session is the education technology solutions and their applicability and feasibility for out-of-school children. कोविड-19 की इमर्जेंस दिसंबर में, ये एक पेंडेमिक का आना, स्कूल्स का बंद हो जाना, बिजनेसेस का बंद हो जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हम सारे एक ऐसे हॉल्ट पे आ गए हुए, वी रियलाइज्ड कि शायद दुनिया बंद हो गई है, अब हम अपने कनेक्शंस नहीं कंटिन्यू रख सकते. ग्लोबलाइजेशन से एक रिवर्स गियर हमने लिया एंड वी मूव टुवर्ड मैसिव डिजिटाइजेशन. एंड असफर भी यहाँ पे आज मौजूद हैं. ही एक्चुअली इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स हैं इन अ रीसेंट इवेंट इन कराची ऑल्सो. एंड वी सॉ कि हमारे पास एक इमर्जेंस, एक राइज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आ रही है, जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स आ रहे हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो कंटेंट डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारे पास ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो हमारे पास ऐप और एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हो. द क्वेश्चन इज कि ये स्पेसिफिक जो हमारे पास इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में ये डेवलपमेंट हो रही है, हमारा टैलेंट मौजूद है जो कि इन सॉल्यूशंस को बना रहे हैं, इनको हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कितना एप्लीकेबल, कितना फीजिबल देखते हैं. The context that I am talking about is an environment जहाँ पे बहुत limited resources हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, जहाँ पर हमारे पास उस तरह का सिस्टम नहीं है जहाँ पे हमारे established स्कूल सिस्टम्स का है. तो कैसे हम लोग ये डॉट्स, ये जो हमारे पास एक डिजिटल डिवाइड है, इसको ब्रिज कर सकते हैं. हमारा वो बच्चा जो एक दूर दराज एक गांव में है जहाँ पे इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं आ रहे, उस तक वो डिजिटल एजुकेशन कैसे पहुंचेगी. हमने एक टेली चैनल और एक टेली सीरीज का आगाज किया. हमने उसके ऊपर अपने जो है ग्रांट्स, अपने फंड्स, अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए. एंड वी मेड श्योर कि हम टेलीविजन के थ्रू ही अपनी रीच बढ़ा सकें. लेकिन स्टिल हमारे बच्चे वो ऐसे मौजूद हैं जिन तक इन चीज़ों की रसाई नहीं है. And that is the realization कि no matter whatever development is happening, अगर वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच रही, तो what are we getting out of it? So I'll actually invite Maria Alam, who will moderate this session and engage our speakers from the education technology sector to enlighten us कि इन जो development हो चुकी है और उसकी कितनी applicability और scalability है इस particular context में. Thank you, Zainab, and thank you everyone, and happy Independence Day. Thank you, Azfar, for joining. Azfar का मैं थोड़ा सा introduction कराती चलूँ. Azfar is joining us from Karachi. He is the program manager for NIC Karachi, which is the National Incubation Center. ये incubation center कुछ अर्सा पहले इग्नाइट ने पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में बनाए, जिसमें से कराची का ऑलमोस्ट सबसे बड़े वाला है. ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो ट्रेनिंग, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं हमारे आने वाले एडटेक एंड जनरली स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए. असफर ने अभी रिसेंटली ही हैक द फ्यूचर के नाम से एक बड़ा अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है और उसमें बहुत सारे अच्छे एडटेक स्टार्टअप्स उभर के आए. उसमें से 3 एडटेक स्टार्टअप्स के बारे में जो अभी फाइनलिस्ट में जा चुके हैं. असफर, आई वुड रियली लाइक कि आप उनके बारे में थोड़ा सा कमेंट करें, उनका बताएं कि व्हाट होप्स डू यू हैव फ्रॉम दीज स्टार्टअप्स, ये किस तरह हमारे फ्यूचर को उन बच्चों के लिए बेहतर बना सकते हैं. टॉकिंग अबाउट इवन जनरली किड्स एज वेल, कि उनका कंटेंट जो है वो किस तरह हर टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करता है और किस तरह जो है आप देखते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स और इन सारे एप्लीकेशंस की क्या लिमिटेशंस हैं. आपको कहाँ लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें बेहतरी की ज़रूरत है. हम कैसे उस बच्चे तक पहुँचेंगे जो स्लम्स में बैठा है, कैसे उस बच्चे तक पहुँचेंगे जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे पानी गैस बेसिक ही नहीं है. तो मतलब ये वाली सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आगे जाके हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो Azfar, over to you. Thank you. Assalamualaikum everyone, and thank you Maria, thank you Zainab, Shanda, and obviously Dr. Shahid Kamar. He's a dear friend and an amazing contributor to the ecosystem. So सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि मुशर्रफ साहब बात कर चुके हैं, डॉक्टर अमजद भी कह चुके हैं, 2 इतने सीनियर लोग बात कर चुके हैं. इस बात पे बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट, आई एम नॉट एन एकेडमिशियन. मैं जो बात करूँगा वो प्योरली फ्रॉम एन starter perspective and what I got from this national education challenge, जो हमने पूरा 1 month long activity थी,
जिसके अंदर एक हमने पाकिस्तान के मोर देन 150 स्टार्टअप्स को, जो कि एडटेक थे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स थे, उनको एंगेज किया था और किस तरह उन्होंने सॉल्यूशंस अपने शेयर किए थे, जो कि पूरी इंडस्ट्री वाइड कोलैबोरेशन हुई थी, जिसमें हमने तकरीबन 20 वेबिनार्स कराए थे। मेंटर्स, इंडस्ट्री के कोई 50 के करीब मेंटर्स थे, इंडिपेंडेंट लोगों ने जज किया था, इंटरनेशनल नेशनल पार्टिसिपेशन थी, और एक हमारा टेस्ट केस था। सो जिसमें हम बिफोर मारिया, जो आपने 3 स्टार्टअप्स का पूछा है उसके बारे में शेयर करूं, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे एज ए रिसर्चर बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चली जो मुझे नहीं पता था। मिसाल के तौर पे द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान हैज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम इग्नोर कर देते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, वो मुझे नहीं पता था कि वो दरस निज़ामी से लेके PhD तक ऑनलाइन एजुकेशन, आज से नहीं, आई वॉज बोर्न इन द 1980s, सो मैं तब से नाम सुनता हूँ उसका। और हम लोग ज़्यादा जो है वो शायद हमारे लिए ये मीम्स और जोक्स बन जाते हैं कि वो जो ट्रैक्टर वाला एक जोक है कि ट्रैक्टर है उसके 2 पहिए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई interviewed Zaul Qayyum Saab, I got to know that this amazing institution is actually delivering and has a great outreach. So वो भी help कर रहा है लोगों की। इस तरह हमारी और बहुत सारी बातें पता चली। The difference between a federal budget, education budget and devolution के बाद जो सारा जो है provinces के पास budget है, and how it actually impacts, जो कि अगर आप national policy की बात कर रहे होते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत clearly हमें पता चला, and that impacts the edtechs as well. So ये हमने देखा। मैं इस साथ में एक वो भी I would acknowledge कि जो काम हम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मैं NJV को कई दफ़ा मेरा विजिट हुआ है डॉक्टर नज़ीर की वजह से। an amazing job, they have transformed the, इतना ज़बरदस्त स्कूल है वो, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वही वाली बात है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से कैसे अच्छा काम हो सकता है। NJV कराची में एक बेस्ट एग्जांपल है, अडॉप्टेड बाय हुवत एंड फ्रेंड्स, सो ग्रेट जॉब सर, हम सब वी आर विटनेस टू इट। सो द बेस्ट पार्ट जो ये 3 स्टार्टअप्स थे हमारे, एंड 150 जिन्होंने कम्पीट किया, ऑल ऑफ देम wanted to change the system। जो आपने बात की वो बहुत मुश्किल, उसका टू बी ऑनेस्ट हमारे पास जवाब नहीं है। इस मुल्क में जहाँ हम लोग 3G 4G की बात करते हैं और 5G भी आ रहा है दुनिया में, उसकी भी बात हो रही है। टू बी ऑनेस्ट देयर आर प्लेसेस इन पाकिस्तान जहाँ पे नहीं है, 2G की भी बात नहीं हो रही है, एंड दिस इज़ अ बिग रियलिटी। फिर पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग जो हम लोग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की बात करते हैं कि 10 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट एक घर है जिसके पास एक ही फ़ोन है, स्मार्टफोन भी नहीं है। तो उसकी जो सबसे बड़ी हमारी फाइंडिंग है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, जहाँ कोई क्लाउड सर्वर्स नहीं हो सकते, जहाँ ओवरऑल इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है। कोविड आ गया था, 22.8 ये 2 करोड़ हों, 2.5 करोड़ हों, लेकिन मेरे ख्याल से तो एक फिगर आई थी 5 करोड़ बच्चे स्कूल्स में। आई थिंक सो एवरी किड वाज आउट ऑफ स्कूल कोविड-19 की वजह से, एवरीवन वाज इम्पैक्टेड। सो जो हमने जो देखा, जो कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी वो वाली बात भी हो जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स हुई आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग। पाकिस्तान के सिनारियो में डिजिटल एजुकेशन विल वर्क एंड इट कैन वर्क। जो एक फैक्टर आ गया जिसने, जो सबक स्टार्टअप था जिसने अपना नाम ही अब म्यूज़ रख लिया है, जो मुशर्रफ साहब भी बात कर रहे थे कि हम कोई फिक्सेटेड ना हो कि कोई क्या चीज़ पढ़ा रहा है या क्या चीज़ कर रहा है, बट दिस मैथ्स, उर्दू, साइंस एंड जो उसका इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन है, जो म्यूज़ जिससे उन्होंने नाम भी अपना रख लिया, वो एक्चुअली इट वर्क्स एट द अर्ली स्टेज लेवल। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स ने जो हमारे यहाँ इस कंपटीशन में हमारी फाइंडिंग थी, द स्टार्टअप बेस्ड इन इस्लामाबाद बाय द नेम ऑफ Taleemabad, they have actually piloted it in few districts of Pakistan, and successfully उन्हें पता चला कि जब ये 4 सब्जेक्ट्स जिनको गेमिफाई कर दिया जाए और उन बच्चों को एक ब्लेंडेड मॉडल भी दिया जाए कि आप जाके टेक्नोलॉजी है बट विद द हेल्प ऑफ अ टीचर आप उस टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
या वो कंटेंट एक सेंट्रलाइज कंटेंट है जो बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं उनकी मादरी ज़बान में या उर्दू में, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी चैलेंज है कि अंग्रेज़ी उनके लिए तीसरे नंबर की ज़बान होती है, पहली उनकी मादरी ज़बान होती है, फिर वो उर्दू सीखते हैं, फिर तो वो तर्जुमा करते करते ही बच्चे का थॉट प्रोसेस रुक जाता है कि वो बात जो है वो किस चीज़ में सोचे। तो वो मॉडल चलता है और उसके कई हमने ऐसे स्टार्टअप्स देखे, कई ऐसे एडटेक्स देखे, मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा। इवन जो हमारे इस कंपटीशन में हमने देखा कि इदारा तालीम आगाही जो है, they experimented with their digital platform by the name of Learning Flipped. So उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इसमें। टीचर रिसोर्स सेंटर है कराची में और कराची से बाहर भी काम करता है। They actually intervened and made a digital product. तो हमारी ये लर्निंग्स हैं कि जहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ इंटरनेट का मसला है, जहाँ एक्सेस का मसला है, जहाँ हार्डवेयर का मसला है, वहाँ जो है वो ये सारे के सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज और मैं शेयर करूँगा, जितने भी स्टार्टअप्स थे, none of them, or since I am from a startup background, so none of them have a really good revenue model, और वो ज़्यादातर ग्रांट बेस्ड थे। ये हमारी फाइंडिंग भी है और ये पूरी पाकिस्तान की एडटेक स्पेस में है, जिससे साफ ये अंदाज़ा होता है इस बात का कि जहाँ दुनिया भर में बिलाल साहब यूएस में रहते हैं, उनको इसका है कि K-12 तक अगर पढ़ाई फ्री है तो आप उसको जो भी नाम दे दें, इंटरमीडिएट कह दें, 12वीं जमात तक कह दें, तो उसमें गवर्नमेंट की तो सपोर्ट चाहिए होगी। ये बजट जो है वो 800 बिलियन हो या जितना भी हो, चारों सूबों का मिला के इसको बढ़ाना होगा ऑब्वियसली, एंड एट द सेम टाइम इंटरवेंशन या ग्रांट्स दें या आप मदद करें इन सारे स्टार्टअप्स की या जो एडटेक इनोवेटर्स की हैं। हेल्प जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही आएगी। दे कांट फाइंड अ रेवेन्यू मॉडल। और जब आप बात करते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे या भी जो आप सारे पैनलिस्ट ने बात की है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, जाहिर है उनकी सबसे बड़ी वजह पॉवर्टी है। उनको वो नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकते, तो वो कहाँ से कोई पे करेगा। सो वी नीड टू ब्रिज द गैप। इवन अगर टेक्नोलॉजी कोई बना रहा है जिसमें कंटेंट एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, या उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन, सो दिस हैज़ टू डू विद इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड वो होता रहते हैं, बट वो प्रोग्राम्स बड़े लिमिटेड लेवल पे होते हैं। वर्ल्ड बैंक भी आता है, दूसरी फंडिंग एजेंसीज भी आती हैं, बट आई डोंट सी देम without any help of a donor to actually scale up, या अपने operations को वो बना सकें जो कोई पे कर सके उनको। तो उनको सबसे बड़ा उन स्टार्टअप्स को अपनी एग्जिस्टेंस का चैलेंज है। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा सीखा जो हमने पूरे मंथ और लॉन्ग कंपटीशन से देखा, कि they can collaborate. So someone is working in Karachi and has developed a good content. This content can work anywhere. So they can collaborate with each other. लोग अपना, for instance, एक startup है Learning Pitch के नाम से, they have converted the entire curriculum of intermediate सिंध का भी और पंजाब का भी, तो सारा डिजिटल उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, लेक्चर्स उसके रिकॉर्ड कर दिए। नाउ दे आर गोइंग फॉर द ब्लेंडेड मॉडल, जिसमें वो पहले वो सिर्फ डिजिटल पे थे, अब लेकिन उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादा उसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस अभी भी पाकिस्तान में ज़रा एक टीचर सुपरविजन भी चाहिए होती है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, what we have seen in this month-long my research project actually was seeing these amazing EdTech entrepreneurs जो काम कर रहे थे, जो एक्चुअली ब्रेक थ्रू देना चाह रहे हैं स्पेस में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें की, और जो ज़बान का मसला है वो भी एक नेटिव लर्निंग के नाम से एक स्टार्टअप है कराची में, जो कि सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची में ज़बान पे भी ट्रांसलेट करके भी काम कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पे उन्होंने काम किया, बट एट द सेम टाइम दे नीड अ पुश, दे नीड हेल्प, एंड ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तभी, देयर बिजनेस मॉडल विल ओनली वर्क जब उनको सपोर्ट मिलेगी। अभी इस वक्त दे डोंट हैव पेइंग कस्टमर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड दे नो द प्रॉब्लम्स, दे नो दी, उसके हल भी काफ़ी अच्छे उनके पास हैं, बट how to bridge this is a big question.
एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगा, we are funded by Ignite. At the same time, Ignite की तरह का एक और गवर्नमेंट इदारा है जिसका नाम USF है, Universal Services Fund, जिसकी funding 1.5% of the gross revenue of the telco sector आती है, और उनके mandate में है ये कि to promote tele-density in Pakistan. At the same time वो different players के साथ जहाँ वो टेली-डेंसिटी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ वो EdTech के लिए भी काम कर सकते हैं. उन्होंने ICT for girls एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया था, but they have the funding, they have the government muscle. They can probably work with existing organizations like Akhuwat, who has a network in the entire country, or someone like Musharaf Saab, who know the dynamic of the entire place. So they can join in. So मैंने देखा है कि collaboration one, and two, a lot has to be done from at the donor or the government level, so to help them out. These were the key findings. Sure, yes. आपकी बात सुन के ही अंदाजा हो कि collaboration भी करने को सब राजी हैं, सब काम करना चाहते हैं. हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बजट और रेवेन्यू का इस टाइम पे बहुत मेजर चंक है जो मिसिंग है. इन सब चीज़ों को सस्टेन करने के लिए को पूरे पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल पे और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है. इन सिंपल टर्म्स सही हो गया. दिस विल बी लाइक वन ऑफ आवर की टेकअवेज जो आज हम यहाँ से लेके जाएं. यू नो मे बी वी कैन talk about it further. My next guest, which is very related to the topic, is Miss Lauren. Lauren is joining us from US. Thank you, Lauren, for joining us today. She is the partnerships lead for learning equality. Let me tell you a bit about the digital divide that we have faced, and currently because of this pandemic, it has been widened. So there are currently 4.6 billion people in the world who do not have access to internet. Okay, so that's the world, but 35% of the population in Pakistan do not have access to internet. So where this leaves us, and these are programs like learning equalities that can actually bridge the gap. Lauren is going to share a small slideshow with us regarding learning equality, how their model actually is implemented in the developing countries, and how it can help make everyone make education inclusive and available to all. Thank you, Lauren, and you can start your presentation, please. Great, thank you, Maria. Hi, everyone. Many thanks for including me in the discussion today. I apologize, I'll be speaking fully in English, so I hope you can understand and follow along with the presentation. My organization, Learning Equality, is a nonprofit, and we've been fortunate to work closely with Talkmill over the last 2 years through the use of our Calibri learning platform. Today, as Maria mentioned, I'm excited to provide a global perspective to our work, some of the challenges we face in terms of access and quality, and some of the approaches we've taken. So learning equality, this is what we do. We aim to bridge the digital divide to foster effective learning opportunities. And we really focus on the half the world that doesn't have access to the internet. Some of the unique challenges that we work to address that I think were mentioned during the introduction are really important to us as well. So we developed our Calibri ecosystem of products because we care deeply about equity. We've always focused on reaching the most marginalized, and in light of the current pandemic, these communities are even harder to reach, and the equity gap has further widened. We work to address issues such as limited or unreliable internet, limited hardware, limited time for discovering quality relevant resources, and an overall lack of openly available and relevant digital materials. There's also more limited understanding of blended learning pedagogies, especially as we think of the move towards distance learning. And globally, we see that there's need for a shift from teaching about ICT to teaching with ICT. And of course, digital literacy skills are always a challenge when they're more limited and you're working to implement tech solutions to support learning. So these issues have become even more apparent as we move towards distance learning solutions amidst the current pandemic, but has always been a key focus of our work. So we've developed the Calibri learning platform. It's open source, and it's designed for and responsive to the needs in low resource and low connectivity contexts. In a typical use case, mini learning hubs are created to provide educators with some of the tools and support that are traditionally only available in internet connected settings. So we're focused on completely offline, leveraging internet when it does exist.
We work on a wide variety of hardware, including low cost and legacy solutions. And we really focus on a completely offline seamless distribution and data syncing model. Calibri provides access to a curated and open license educational content library, which you can see here. It's available in a variety of languages, academic and non-academic subject areas and grade levels, and has a strong focus across K-12. Materials drawn from sources in this library, along with educational materials uploaded by users, can be aligned according to relevant national curricular standards, as you can see here in an example in Spanish, using our Calibri Studio platform. The process that you're looking at here is how we support curriculum alignment with our online Calibri Studio tool. Relevant sets of materials can then seamlessly be imported into the offline platform Calibri, which allows simple workflows for managing and keeping content updated. Learning materials can be updated from the internet, from a USB thumb drive, or from a local device in the local network. So here what you're seeing is the process of importing content in this seamless way. These materials can then be accessed by learners offline without the internet. Learners can watch videos, they can read documents, they can play games, interact with simulations, and practice using exercises with real-time feedback. Teachers similarly can engage with content. They can view lesson plans. They can see guidance materials on how to support their learning. Within the platform, learners can also be grouped into classes and then be assigned lessons and quizzes by an educator to support more formal learning. Educators can then track learner progress on our coach dashboards. They can identify learners who are struggling and may need additional support, and they can make use of tools to further differentiate and personalize learning. Learning Equality has also developed an openly licensed Calibri EdTech toolkit, and this contains pedagogical materials to support blended learning and training of trainers. A unique aspect of what we do is that the fact that Calibri can run on a wide variety of low-cost and legacy hardware devices, as I mentioned earlier. And what this means is that the existing infrastructure can be leveraged, as well as new supplemental hardware can help to really create these learning hubs in a wide variety of access models. Some of these models include a stationary computer lab, like we work with UNICEF in Uganda, where computers installed about 7 or 8 years ago are being leveraged. It can be a roving server with tablets that move from class to class, such as in Honduras with our nonprofit partner Shoulder to Shoulder. We also support an offline-online syncing model where in our work with UN Women, learners engage with content in offline learning hubs, and then when they go home are able to access their same accounts in an online, the same online version of Calibri with their same accounts. And we also support a zero-rated telco model where operating country offices of Vodafone provide free access to Calibri with special, with targeted content that has been hand-selected specifically for use in that country. Soon we'll also be releasing an Android app for self-contained use at home or in scenarios where a local server isn't accessible. And so I think the key takeaway here is that we're really thinking about, again, what infrastructure exists, how can we best leverage that, how can we support learning in a wide variety of contexts, and how can we really adapt for the model. And so by doing this, Learning Equality has reached learners in more than 200 countries and territories throughout our work. We've reached conservatively more than 6 million learners. And we've seen broad impact from increases in learning, such as boosts in math scores in Guatemala, the obtainment of certifications by prison population in the United States, and increased educator confidence in India and learner confidence in Sierra Leone. So just to name a few, we're not just thinking about improvement in learning outcomes, but really in the whole experience and how can we support the broader educational ecosystem through the addition of education technology. So in terms of this particular discussion and how we think about making EdTech more inclusive, there's 3 key areas that we wanted to highlight. The first is thinking about our design principles for our learning platform. So as mentioned earlier, we're highly focused on equitable access. So not just making sure that everyone has access to the same thing and focusing on equality, but really focusing on those learners that need additional support
or where there are other infrastructural or institutional barriers to accessing quality educational opportunities. We also focus on effective learning experiences, and I think you saw this through the design of our learning platform, as well as consistent experiences. So making sure that whether you're using our Calibri learning platform that's offline, or Calibri learning, or Calibri curricular tool with Calibri Studio that's online, that learners throughout our ecosystem have a consistent experience, and that there's real strong community ownership over the platform and its use. And it's very adaptable to different contexts. You pick and choose what content you bring in. The platform itself is internationalizable so that it can better support the needs in different contexts. Of course, this conversation wouldn't be complete without talking about accessibility, because of the educational solutions with technology that you're designing aren't accessible, you're further marginalizing certain groups. And so since Calibri is a web browser-based platform, we've aimed for partial web accessibility compliance and are continuing to work on this, as well as have multimodal learning resources. We clearly document and are transparent about our efforts on accessibility, and we also work to support organizations in creating more inclusive learning resources. And the last thing to highlight is our inclusive approach. So we take a really needs-based iterative approach to our product design, as well as to selecting the content that we bring in. We co-design with beneficiaries as much as we can. We iterate quickly, and we're constantly reprioritizing our roadmap based on the needs that we're hearing. And the existing pandemic is a great example of that, where we've had to shift based on school closures globally. All of that informs our feedback loop. So, and also just to note, in terms of internationalization, as I mentioned earlier, for example, the Calibri learning platform is available in Urdu. It's also available in about 24 other languages. So, and our collaboration model and how we really achieve this, as I mentioned, is this really tight iterative feedback loop where we work with organizations like Takmail and others to better inform how we design our product. And the whole goal here is to really support a do-it-yourself model so that organizations are not reliant on our organization Learning Equality to support them through that process, but rather that they have an open learning platform, all the documentations to support them on its use, a toolkit of resources to support training of trainers, and more. I think it's worthwhile to note, just given the timeliness of this conversation, that we've had to adapt during COVID, and I think had always been designing towards a more individualized use case, but have been prioritizing situations where learners would be coming together in some type of social setting, which obviously looks quite different now. And so what we've done to support the at-home use of Calibri during the pandemic is, beyond making access our existing Calibri learning platform, its content library, and our Calibri Studio curricular tool to support alignment, we've done a few things. So we have an expanded toolkit with a how-to guide to set up Calibri in 5 easy steps, recognizing that there might be even more limited digital literacy skills at home, also recognizing that the hardware at home, if it exists at all, looks quite different than perhaps in a learning environment in a formal context. So we've done that, and then to accompany that, we've developed pedagogical resources, not just for learners, but also for educators at a distance, where an educator might have access to Calibri, but a learner does not, as well as additional support to parents and caregivers to support learning in the home. We've updated our Calibri content library with additional aligned resources, also brought in COVID-specific resources from content creators around the world, as well as the WHO. We've developed our Calibri content catalog, which you saw earlier, and as mentioned, we're releasing a self-contained Android app with facility syncing. So just a few quick examples. We're in Uganda, there's a national level platform for Calibri that has been 0 rated, where learners can access content that has been aligned to the curricular standards. Something very similar has been done in the DRC with Vodafone in a 0 rated model, but done by a telco. We've seen other similar online examples. For example, an organization in Bangladesh, Agami, also has put their platform online, as well as our colleagues with UNHCR in Jordan. So we've seen this move quite a bit. And then another distribution model in the US, we're seeing where Raspberry Pis, low-cost computing devices, have been preloaded with content
sent home with learners that don't have access to computers or internet. And they review their materials and go back to a school periodically to be able to sync data and get more content and have a educator review those materials. So here are a few examples of how we've adapted in light of the current pandemic and are continuing to learn and inform how we can better support that. So I hope you'll consider Calibri if it makes sense for the learners that you're supporting. And I've included some links here, which I can also put in the chat. But again, everything that we do is fairly open. We're also always looking for support in terms of content or otherwise to contribute to our work. So thank you so much for listening today. Thank you, Lauren. What I gathered from the conversation was, we need to leverage the options that we already have, use technology very intelligently, involve telcos with us, and definitely make it more inclusive in terms of, adopt more models like learning equalities. Thank you so much, Lauren, for shedding a light on your program. अब मैं चलती हूँ. I'll switch to Urdu now and I'll go to my next guest. My next speaker is, I'm really honored, and I know you had a very busy day and you still, अपनी commitment पूरी की और आपने हमें join किया. Bilal Musharaf. Bilal Musharaf का मैं थोड़ा सा introduction करा दूँ. वैसे तो generally he is the man with the numbers. He is an actuarial scientist by profession. But इन्होंने education के लिए जो किया है शायद बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ना जानते हो. But just to give you guys a little background. ये Dean of Translations रह चुके हैं, former Dean of Translations for Khan Academy. Khan Academy is basically a non-profit जिसको सब जानते हैं, which is like a pioneer इदारा online education provide करने के लिए, जिसने ये prove किया कि एजुकेशन के लिए स्कूल और क्लासरूम इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन भी बड़े आराम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है. अब जो है ही हैज़ जॉइंड एज वीपी एक्सपेंशंस फॉर नून अकेडमी. नून अकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है और इनका जो बैकग्राउंड है वो ये कि नून अकेडमी इज़ बेसिकली एडटेक स्टार्टअप फ्रॉम द यूएई. इन्होंने इस टाइम पे ऑलमोस्ट $21 मिलियन का जो इनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो इनको आ चुकी है. एंड आई वाज लर्निंग द आर्टिकल द अदर डे. इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े मजे का है और बड़ा डिफरेंट है. वो ये कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन कंटेंट है वो इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं. देयर इज नो एक्चुअली ह्यूमन कनेक्शन जिसकी वजह से बच्चे इंटरेस्टेड रहें ऑनलाइन चीज़ों को सीखने में या उनसे कुछ अच्छा हासिल करने के लिए. तो इनका जो कंटेंट है मैं बिलाल साहब से ये पूछूंगी कि क्योंकि इनका कंटेंट के हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है, क्या फील करते हैं कि पाकिस्तान के उन बच्चों को मद्देनजर रखते हुए जो आउट ऑफ स्कूल है, ये कंटेंट हम किस तरह कल्चरली रिलेटिव, साइकोलॉजिकली अपलिफ्टिंग और ऐसा बना सकते हैं कि जिससे ना सिर्फ बच्चा न्यूमरेसी लिटरेसी स्किल सीखे बल्कि मॉरल्स, वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग, एक्सपोजर, ये सब कुछ उसको मिल सके. सो काइंडली शेड अ लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. और ये कि बिकॉज आपका एक्सपीरियंस, आप खुद पाकिस्तानी और आपका एक्सपीरियंस जो है वो बाहर का रह चुका है, तो आप किस तरह इस कंटेंट को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करता हुआ देखते हैं? शुक्रिया मारिया. Great to participate in this discussion and also be part of many esteemed individuals representing credible, well-respected organizations. Good to see Lauren participate as well. जो learning equality है, ये इदारा शुरू किया था एक खान अकेडमी के इंटर्न ने, जेमी, जिसको मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ. तो जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 20 साल से एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कि एक लेस कैपिटल इंटेंसिव इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा था, उसकी काफ़ी लोग निशानदेही भी कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो हर्डल था, it required an investment on the part of government, it required an investment or a buy-in on the part of civil society to really transform these ecosystems to a less capital intensive way but enhance learning so that it's more personalized. वो खुदा का करना ये हुआ है इस वायरस की वजह से हो गया है. And actually I'm sitting in Pakistan as a result. I was in Singapore up until 2 months ago working for a different company. So my own journey is I'm sort of an accidental educationist. मेरा अपना background actuarial science में था, लेकिन मैंने graduate studies में education की भी degree कर ली because I was more interested actually in applied research and how that gets commercialized. But then I had an opportunity just by chance to join the founding team of Khan Academy. That was a transformative experience, and I also got to see how many countries
in Latin, particularly in Latin America, Mexico, and Brazil in particular, and then also France, addressing the needs of Francophile Africa. Saw this as an opportunity कि K through 12 education का content एक मुफ्त एक शख्स ने create कर लिया है और उसके through उसको funding भी मिल रही है, so they can actually plug this hole that exists in education in much of the developing world. तो वो सिलसिला खान academy करता रहा, but वो that proof of concept got established fairly quickly कि ये तो आसान काम है, to create content is easy and to reach now a global audience through YouTube or other means had become very easy. So in some ways Khan Academy I would say became a victim of its own success because हमारा North Star Khan Academy में ये था कि it would become a not-for-profit institution, much like Harvard, MIT or Stanford. It would have its own endowment और हमें हर साल चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अब इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं इंटरनेट पे कि there's Khan Academy को भी हर साल donations की जरूरत पड़ती है. So but that's the good news. The good news is content की अब कोई कमी नहीं है. Now there is the issue is no longer content creation on as far as education technology is concerned. It's more about content curation, but we'll get to that later. So now where I am now is with this platform called Noon Academy, and what Noon Academy is trying to do and where we can spend more time talking about is systemic issues in developing dunya mein, jahan teaching as a profession unfortunately is a profession of last resort. So सही लोग नहीं जा रहे उस सेक्टर में. जिन मुल्कों ने जैसे फिनलैंड ने ये फैसला किया आज से 30-40 साल पहले कि नहीं ये नहीं होना चाहिए और they're going to consider teaching a very serious endeavor. उन्होंने ये नहीं कि वो तनख्वाहें उन्होंने बढ़ाई, उन्होंने they made it very hard to become a teacher and they raised the profile of a teacher to the same level as engineers and doctors. तो वहाँ पे education system ज़बरदस्त हो गया over time. So we want to, like at Noon Academy, we're trying to do that because the private tutoring industry is thriving, and it's not just Pakistan, it's across the developing world because good schools have not kept up with the rise in population. So you either have these tutoring centers catering to parents or students wanting to get into those good schools or helping kids get better marks, but again catering to a very exclusive community. We want to change that, and we want to change that by enhancing the reach of these teachers. And what we've seen is that when you move from a one-to-many model to a many-to-many model, तो students एक दूसरे से सीखना शुरू कर देते हैं. Like magic number is 2,000 students. If one tutor is managing 2,000 students, तो उसकी dynamics kick in कर जाती हैं. And a platform like Noon has developed those features within itself to manage study groups in a fun way. उसमें gamification है, उसमें आप for example अगर आप history पढ़ा रहे हैं तो आप तमाम groups को एक सवाल दे सकते हैं ताकि वो within those subgroups उस सवाल का एक consensus based जवाब निकालें, तो उससे उनकी आपस में learning होती है, फिर across groups discussion होती है. So it's both collaborative undercurrents as well as competitive dynamics that can lead to learning. So taking a step back, like what is education technology? It's the effective use of technology in the delivery of education, and there's many aspects to it. But it's a means to an end. It's not an end in itself. And there's a consensus around what the North Star is today in terms of what education means. And perhaps it has always been the North Star, except that it was the purview of the few. लेकिन आज टेक्नोलॉजी इसको काफ़ी लोगों को ये अवेलेबल कर सकती है. और वो क्या नॉर्थ स्टार है? वो नॉर्थ स्टार है जी के लर्निंग हाउ टू लर्न.
That's education. It's pattern recognition. It's thinking critically. It's problem solving. Though that's education. बाकी सब कुछ उसके मातहत है. It's increasingly the thing is that education ought to be child centric. It should be discovery based. ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि बच्चा खुद फैसला करे कि वो क्या सीख करना चाहता है और उसके नीचे फिर आप चीज़ें सिखा सकते हैं उसे. अगर वो चारपाई बनाना चाहता है तो आप उसको ज्योमेट्री चारपाई बनाने के जरिए सिखा सकते हैं. So this is basically project based learning. So the good news is, again, we have a ton of online resources, both static and interactive. Now we are in a realm where we moved from content creation. There's a ton of free content to content curation. We're using artificial intelligence and machine learning to do that. And we're moving from a one-to-many way of teaching to a many-to-many way of engagement. And whether that is synchronous, teacher live पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं, या asynchronous, कि वो recorded courses हैं, आप जब मर्जी आए उसको अपने time और अपने space में consume कर सकते हैं. But in terms of like the systemic issues we are facing, कि बहुत young demographic है, endemic poverty है, ये इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. सन 2000 में तमाम मुल्क इकट्ठे हुए थे यूनाइटेड नेशंस में और कहा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम 2020 तक के कर लेंगे सब कुछ. 2015 तक पता लगा कि way off. So 2015 में फिर जब they decided, okay, this is not happening, so they've been converted into sustainable development goals. And now again, and through like over the last 10 years working for Khan Academy and the company I joined after that, Edmodo, and now known to many, recently joined Kiev, I've had the opportunity to travel a lot in the developing world. और सबकी कहानी यही है कि it's just not, we're not meeting the targets. So I think we have to fix the market dynamics, because we can't throw money out. It's the $1 trillion question for the developing world, and it's not just for education, but since we're talking primarily, this forum is about education. It's about how are we going to allocate those resources. The way the education system, the education system that we are inheriting is bankrupt. You've probably seen the TED talk given by Ken Robinson, कि जो एक बच्चे की फितरत में होती है divergent thinking, वो जब तक वो बच्चा खत्म करता है हाई स्कूल, वो divergent thinking बिल्कुल कटेल हो जाती है. So there's something fundamentally wrong with the education system, and in the West people are talking about it कि ये गलत है. तो बहुत पॉकेट्स में, अमेरिका में तो बहुत पॉकेट्स में ऐसे स्कूल्स हैं जो रिस्क ले रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा रहे हैं. They're bundling, they're basically letting go of things like homework and exams, and also age stratification to deliver education in a different way. तो एक बड़ी interesting किताब है इस सिलसिले में, Weapons of Mass Instruction, which is basically written by a New York public school teacher about how the bankruptcy of this education system. So when I, what the thought that comes to mind is, unfortunately, but perhaps fortunately, we have a lot of children that are not in school. And maybe we can create, khayali pulao hai, lekin kyun nahi? Perhaps we can create a beeline to this modern way of teaching. And अगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो क्यों ना उनको एक ऐसी एवेन्यू प्रोवाइड की जाए जिसमें they are provided 21st century education. But one would have to actually take it in incremental steps. But so my proposition is that we create, so we establish a proof of concept around that, and one would do that by showcasing
how children who are being supported in this way of education eventually are better problem solvers. And one forum that you can do that in are maker fairs. So in the Bay Area, California, for example, there's every year a maker fair that happens. उसका आपको ticket लेना पड़ता है, अंदर जाते हैं और young लोग, not necessarily young, but young लोग primarily हर किस्म की चीज़ें बना रहे होते हैं, handicrafts बना रहे होते हैं, electronics की चीज़ें भी बना रहे होते हैं, और आप वहाँ खरीद भी सकते हैं directly. So having perhaps at the 8th grade level be that as a market level benchmark to see कि बच्चे कुछ बनाएं और बेच भी सकें वहाँ पे जाके. So that is, so do away with exams, do away with homework, but bring project-based learning into the equation and let these children learn knowledge under the umbrella of this project that they're working on with other children as well. Or so this would be completely decoupling learning from evaluation, which was the philosophy that Khan Academy was running on as well. Salman Aksar, I mean, he used to say that, is whatever you guys are, we're not doing the assessment. We're just, if there are any assessment tools that are built into Khan Academy, it's only to inform the learner where they might have gaps in comprehension. How the learner is applying that knowledge base is up to them. So decoupling learning from assessment, and then mobilizing a new breed of educators. So where will these educators come from, and why would they want to teach these children? जैसे कि अमजद साहब ने कहा कि वो community, volunteer based community भी हो सकती है. हमारे ज़माने में हम लोग एनसीसी के 20 नंबर लेते थे ड्रिल करके और गोलियां चला के, लाइक खैर वो एनसीसी तो खत्म हो गई है, लेकिन even graduates or BA degree or pensioners, whoever Amjad Saab had suggested, volunteerism है उसमें income potential भी होना चाहिए, क्योंकि we have a lot of people who are even at the low income segment of our population who are willing to invest in their children if they see the light at the end of the tunnel. तो इनकम पोटेंशियल होगा अगर ये मेकर फेयर्स होंगे जिसमें बच्चे जाके अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बेच सकते हैं बल्कि there's a potential for them to get picked up into Azfar Saab's incubators later on. So they can then bypass ये तो सारा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में. So there is, you can take a direct line to entrepreneurship, go into incubators, go into startups, get angel stage financing, and go that way. Or as Finland does it, कि एक स्टेज आती है, फिनलैंड में तो 16 साल की उम्र तक आप इम्तिहान कुछ नहीं लेते, लेकिन 16 साल से 18 साल की उम्र तक फिर आप तैयारी करते हैं और 18 साल की उम्र में आपका इम्तिहान होता है. उसके बाद फैसला किया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगे या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे. So it can be arranged, but I think in conclusion, I think a pilot study is needed, and this doesn't have to be a massive pilot study. Statistically, even 1000 बच्चे जो स्टैंडर्ड स्कूलों में जा रहे हैं, आप 7वीं के बच्चे ले लें और 1000 बच्चे जिनका कोई पुराने हाल नहीं है, उनको आप एक ट्रीटमेंट ग्रुप बनाएं, उनको आप 2 साल इस किस्म की एजुकेशन दें और उनसे कंपेयर करें जो 1000 बच्चे रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, और फिर इन 2000 बच्चों को लेट देम पार्टिसिपेट इन अ मेकर फेयर एंड सी हु डज मोर इंटरेस्टिंग problem solving and comes up with the better projects. And that would be the proof of concept that you can take to policymakers and say that they ought to put their weight behind such a program. Definitely, I completely.
सही हो गया व्हाट आई गैदर्ड और आपने तो पूरा वही एक चेंज कर दिया कि हमें करिकुलम जो निसाब हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से उसको चेंज करने की प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्रिटिकल थिंकर्स वो लोग अगर हमने बनाने हैं तो ये छोड़ दिए जो पुराने इतने अरसे से काम हम करते आ रहे हैं और उन करिकुलम्स के ऊपर लड़ाइयाँ भी चल रही हैं कि जी मैथ पढ़ाना है इस्लामियत पढ़ानी है क्या वी नीड टू एक्चुअली चेंज इट हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करके एंड एज यू सजेस्टेड कि हमें उन बच्चों से वाकई में एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लें और देखें कि वो क्या करते हैं आई एम श्योर कि वो दुनिया के लिए प्रूफ होगा कि वी नीड टू चेंज व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन वो स्ट्रेस वाला जो रूटीन है वो खत्म करना पड़ेगा अच्छे लोग बाहर निकालने पड़ेंगे थैंक यू सो मच दिस इज लाइक द बेस्ट वो जो आपने conclusion दिया I couldn't have asked for more now taking over to Zainab please Zainab your mic Thank you, Maria, and thank you, speakers. Actually, this was a very insightful session, and Dr. Naveed bhi yahan pe baithe hue hain. He uses a term कि when the neurons actually wire together and then fire together, तो आपकी thoughts आती हैं, आपके जो हैं बहुत सारे conclusions derive होते हैं. मैं थोड़े से इसके ऊपर reflect back करूँगी ताकि हमारी जो सारी audience को मैं एक थोड़ी सी brief journey दे सकूँ. असफर ने हमारे साथ ये शेयर किया कि there is a rise of startups in Pakistan जो कि education technology में हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें बट द लैक इज ऑफ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल जहां पे गवर्नमेंट एज अ कोलैबोरेटर आ सकती है जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसमें जो मोस्ट डोमिनेंट चैलेंज है और अभी मैं फेसबुक और जो साथ में हमारी ऑडियंस है उन्होंने भी हाईलाइट किया एंड दीज आर द पीपल फ्रॉम थर फ्रॉम फाटा एंड फ्रॉम दी रिमोट एरिया जिन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास तो मोबाइल का भी कनेक्शन मुश्किलों से आता है लेकिन ये कि वी हैव जॉइन टुगेदर और हम जानना चाहते हैं कि हमारे इलाके में इंटरनेट के और इन कनेक्टिविटी के इश्यूज कब आएंगे हम डिजिटल आइसोलेशन से कब निकलेंगे देन वी मूव टूवर्ड्स लॉरेन और लॉरेन ने हमें एक ऐसा मॉडल बताया जो कि पाकिस्तान में एटलीस्ट 8-9 जगहों पे अभी इम्प्लीमेंटेड है मीरपुर खास के ऐसे गांव में भी इम्प्लीमेंटेड है जहां पर जो है सिर्फ पूरे गांव में एक लैपटॉप है और 2 फोन है जो कि स्कूल में जो है डिप्लॉय हुए हैं तो शी एक्चुअली इनलाइटेंड अस कि एक अगर कंप्लीटली ऑफलाइन मॉडल हो हम लो कॉस्ट हार्डवेयर इस्तेमाल करें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें और एक मल्टी लैंग्वेज इंगेजिंग कंटेंट बनाएं तो हम एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन बना सकते हैं एक अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से कि जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करे And then we got to the final point जहाँ पे I think that was the deep dive into understanding the revolutionary जो हमारे पास आगे के मॉडल्स आ सकते हैं कि हमारे पास डिजिटल कंटेंट abundantly अवेलेबल है हाँ अलबत्ता कंटेंट क्यूरेशन इज द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड इन द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें कोलैबोरेटिव एंड कंपैरेटिव डायनामिक्स ऑफ लर्निंग मॉडल्स स्पेसिफिकली स्टूडेंट सेंट्रिक एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसमें बच्चे को सीखने दें जो भी सब्जेक्ट वो सीखता है लेकिन अपने तरीके से and then we need to establish a proof of concept of these models in particular in our communities in Pakistan context to know कि उनमें कितना potential है so this marks the end of our second session that is EdTech solutions for out of school children access and applicability